CA Final students, are you planning to appear for CA Final Paper 6 IBS in May 25 or September 25? If yes, this video is for you. Hello, I'm CA Simple Duseja, a co-founder at the CA Odyssey. And today in this video, I am bringing to you a basic illustration of how to use our book IBS 360 degrees. Before beginning with the illustration part, let me introduce you to the book. Let me describe what IBS 360 degrees is all about. So this is the book in which what we have done is we have compiled all the past case study questions that have been asked in exams, MTPs, RTPs, or anywhere at all. We have bifurcated them subject-wise and then grouped topic-wise to make it simpler for you to use it during your examination. Let me show you how our book looks like. Wait. Okay. So this is the index. Just give me a second. Alright, this is the index for our book where you can see part 1 FR, which has been divided into topics, schedule 3, index, generic questions, index 1, etc. I'll take you to one page. Let's go to 1.6, cash flow statement, just to illustrate what it actually does. 1.6, yes, see. So आपके past exams में MTPs में RTPs में जो आज तक अवेलेबल रही हैं उसमें जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल आए होंगे वो हमने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं. हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं. जस्ट इन केस यू सी द पेपर, यू फाइंड अ क्वेश्चन and you remember or you don't even remember, that is fine, कि ये सवाल कहीं आया होगा नहीं आया होगा. आपने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, you come to this book, you go to the cash flow statement वाला पेज 1.6, you see whether in these questions you find 4 questions है, 3 questions है, उसमें देखो आपको दिख रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, move to संपूर्णा, move to your module, move to whatever book you have been using for that particular subject. But if you find it here, find the question here, you get the exact solution for that question, right? That makes it simple. So let me illustrate. I'll use MTP1 for May 25 and I'll illustrate you कि कैसे आपको सवाल मिलते हैं तो क्या करना है और नहीं मिलते हैं तो क्या करना है. So let's move to MTP1. Okay. केस स्टडी 5 से ही शुरू कर लेते हैं. उल्टी खुली है मेरी केस स्टडीज, कोई बात नहीं. We'll move to descriptive question directly. Okay, let's see. This question 7. Calculate the value of supply for GST purposes in each of the plans launched by insurance company on the e-platform of SWAL in the case study. Let's see. Okay, this is, now when you read the question, you have it in mind. ये GST का सवाल है और ये value of supply का सवाल है, right? देखते हैं क्या है ये e-platform. Let's go to IBS 360. Let's see if we get it there. Go to the index. Wait. We'll come to the index. We'll find value of supply there. This is IDT ka index and value of supply. You will find it here. 7.7. Let's move to 7.7. You see value of supply here. Now you'll see all the questions that we have found for value of supply in all the case studies that we have compiled here. अभी इसमें हम वो ढूंढते हैं जो हमें चाहिए.
So we scrolled through whole of the value of supply content and we realized कि ये question यहाँ नहीं है. Playing very honest. अब क्या करोगे? Move to the module or whatever question bank that you have been using or a content book or Sampurna, let's say. Find it there and you'll get the answer there. But what if you actually find the answer here? I'll illustrate one thing. इससे तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, but not that. Let's move to case study number 3. Okay, this is 5. We'll scroll to 3rd. Okay, case study 3 का question. Let's see. Advise the appropriate accounting treatment, if any, for the 2 grants received and the earthquake-related compensation in the books of SAL. Accounting treatment बताना है 2 grants जो receive हुए हैं और earthquake-related compensation की बात हो रही है. So, ये FR का सवाल है, government grants का सवाल है, India's 20. Okay, let's move to the IBS 360 and we'll scroll up to the next. Obviously, तुम लोगों को scroll तो नहीं करना एग्जाम में because you'll be taking the book. Using a book is easier than using a PDF for sure. Okay, FR. Here it is, India's 20 government grants, page number 1.6. Let's move to 1.6. 1.16, I'm sorry. 1.16. Yeah, here we are. ये नहीं है, ये भी नहीं है. 2 grants की बात हुई थी और okay, you see, explain the accounting treatment, if any, for the 2 grants received and the flood related compensation in the books. Flood का earthquake कर दिया, but सवाल तो same है. Accounting treatment of 2 grants and the flood related compensation. You got the exact same answer. मुझे फिर भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा scrolling back to the index and then here, but एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा. Whereas अगर आप ये चीज डायरेक्टली बुक से, मॉड्यूल से या फिर क्वेश्चन बैंक से ढूंढने की कोशिश करते, इंडेक्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते, इतना जल्दी आपको नहीं मिलता. सो आई शोड यू बोथ द सिनेरियोज जहां आपको ये सवाल IBS 360 डिग्री में मिल रहा है और जहां आपको नहीं मिल रहा. IBS में 4 केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी है. यू विल हैव लाइक 20 MCQs and 12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. इसमें से 1, 2, 3 रिपीट हो ही सकते हैं सवाल. सो दिस बुक विल एक्चुअली वेरी बी हेल्पफुल फॉर यू. जो चीजें यहाँ नहीं मिल रही हैं वो तो आपको वैसे भी दूसरी बुक्स में तो ढूंढनी ही है, बट कुछ मार्क्स अगर आपको वहां से 15 मार्क्स का भी सोल्यूशन यहाँ से डायरेक्टली मिल जाता है, इट विल सेव यू अ हेल लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज जब आप कंटेंट बुक में ढूंढते हो क्वेश्चन के आंसर्स, यू हैव टू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट इट बट ऑल्सो थिंक कि आंसर लिखना कैसे है, फ्लो क्या रहेगा, कुछ चीजें अपने मन से लिखनी होंगी, एटसेट्रा यहाँ से उठा के आपको बस पेस्ट करना है उधर. सो इन दिस वे दिस बुक इज गोना प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ये वीडियो हम इसलिए लेकर आ रहे हैं बिकॉज अभी तक शायद कंफ्यूजन था कि इस बुक को यूज कैसे करना है. मैंने आपको दोनों केसेस यहाँ पर दिखा दिए, जब आंसर आपको मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है तो भी क्या करना है. ऑलराइट, आपके इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, आप बेशक पूछ सकते हैं. हमारा नंबर, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, एवरीथिंग विल बी हियर टैग्ड इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज, एंड ऑल्सो अगर आपको ये यूजफुल लगा, please place an order as soon as possible because exam is just around the corner. All right, see you again in the next video. Stay tuned for next updates.